Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. बच्चों, मेरे वो मुल्क के बच्चों जिस मुल्क से भी मुझे प्यार है, जिस मुल्क के बच्चों से भी मुझे प्यार है, मैं उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसा सबक लाया हूँ और उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश का हरफ तक नहीं पढ़ना आता, जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मेयारी किस्म का सबक लाया हूँ कि वो इंग्लिश रीडिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और इस पे बहुत मेहनत हुई है, इसके भी पार्ट हैं, ताहम ये आपको इन 10 दिनों में ये मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। ये बुक 1 है, इस बुक 1 में ये प्रेजेंट करता चलूँ, चुनांचे ये फर्स्ट है तो इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए ज़रूरी था। इसमें भी इसबाक हैं, ये बुक 1 है, इसके 5 इसबाक हैं, फिर बुक 2 होगी, उसके भी इतने ही इसबाक होंगे, उसके मुताबिक आपकी प्रैक्टिस होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस सबक में जो हम पढ़ेंगे उसकी फहरिस्त आप लोगों के सामने है। हमने आज एट फैमिली के बारे में पढ़ना है। एट फैमिली से मुराद ऐसे वर्ड्स जो एट सीरीज से हों। फिर हम नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट लेक्चर में एंड पढ़ेंगे, देन एट फैमिली एंड एम फैमिली का पढ़ेंगे। आज की एट फैमिली में हमारे जो वर्ड्स दस्तियाब हैं हमारे लिए और उनकी प्रैक्टिस वो ये है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। 80 at, H80 hat, SAT sat, CAT cat, MAT mat, RAT. Let's repeat again. At, hat, sat, cat, mat, rat. अब आप पढ़िए और आपके पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगा। At, hat, sat, cat, mat, rat. Good. Perfect. Now let's practice these sentences. Look at my cat. Look at my cat. लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़िए, लिंक बनाकर पढ़िए। Look at my cat. Look. Look. Would you look at that? Would you look at that? Repeat again. Look at my cat. Look. Look. Would you look at that? Speed up. Link the words. Look at my cat. Look at my cat. Look, look. Would you look at that? Perfect. That is not a hat. That is not a hat. That is my cat. That is my cat. Now repeat after. That is not a hat. That is my cat. That is not a hat. That's my cat. My silly cat. My silly cat. Silly cat. My silly cat is scared of mice. Scared. Scared. Mice. Mice. My silly cat is scared of mice. Scared. Mice. So she hides on my hat. So she hides on my hat. Repeat again.
My silly cat is scared of mice, so she hides on my head. I tell my cat, I tell my cat. I tell my cat, don't be scared. Don't be scared. Mice can't catch you. Mice can't catch. Mice can't catch. You way up there. You way up there. Now repeat again. I tell my cat, don't be scared. Mice can't catch. You way up there. Good. Then one day, my cat said, mice, mice. Then one day, my cat said, mice, mice. I got scared. I got scared. I got scared that I screamed twice. I got scared that I screamed twice. The cat in the window. The cat in the window is looking at me. The cat in the window is looking at me, said a bird who sat on the branch of a tree. The cat in the window is looking at a bird who sat. Cat at sat. The cat in the window is looking at is looking at me. The cat in the window is looking at me, said a bird who sat on the branch of a tree. A bird who sat on the branch of a tree. Now repeat again. The cat in the window is looking at me, said a bird who sat on the branch of a tree. Perfect. Now. A second bird said, no. A second bird said, the cat is looking at me. Cat at. The cat is looking at me instead. Now. A second bird said, the cat is looking at me instead. The cat looks at me. The cat at. The cat looks at me because I am better. Said bird number 3 as she flapped her feather. Flapped number because better cat at looks. Now repeat again. The cat looks at me. The cat looks at me because I'm better, said bird number 3 as she flapped her feather. शाबाश. क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना? Be with me, huh? But the cat was a toy. But
B. B. The cat was a toy. But here here B. B. But the cat was a toy with a glass eye, and stuffing. So the cat in the window was looking at nothing. Now repeat again. But the cat was a toy with a glass eye and the stuffing. So the cat in the window was looking at nothing. Perfect. Now the last story. आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा बच्चों. ये आई थिंक सेकंड लास्ट स्टोरी है, साथ रहिएगा. We have three cats, but only one mat. ये स्टोरी है 3 बिल्लियों की, जिसमें उनके पास सिर्फ एक मैट रह जाता है जिसके ऊपर उन्होंने बैठना होता है. और मैट इतना बड़ा नहीं होता, सिर्फ एक बिल्ली के बैठने की जगह होती है. तो तीनों बिल्लियाँ कैसे कंप्रोमाइज़ करती हैं. So one cat sat on the mat. Then the second cat sat on the cat that sat on the mat. Cat sat, mat. Cat sat, mat. Then the second cat sat on the mat. Then the second cat sat on the cat that sat on the mat. Then the third cat sat on the cat who sat on the cat on the mat. Cat sat, mat. Now repeat again. Then the third cat sat on the cat who sat on the cat on the mat. And then they were happy. How about that? A rat went to the store to buy a hat. A rat went to the store to buy a hat. A rat went to the store to buy a hat. The first hat was too big. The first hat was too big. The first hat was too big. The second hat was too small. The second hat was too small. The third hat was just right. The third hat was just right. So the rat ate it bite by bite. So the rat ate it bite by bite. Rat ate bite. आज हमने सीखा कि एट फैमिली को कैसे प्रोनाउंस करना है, जिसमें नुमाया अल्फाज कैट, मैट, सैट, एट, रैट, हैट जो हमने पढ़े. आई होप सो कि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आई होगी. इन्हीं समझ के साथ हम आपके लिए अगला एपिसोड लाएंगे जो
EA इंग्लिश फोनिक्स बुक 1 होगा और लेसन नंबर 2 होगा। और इस सबक को गूगल पर हासिल करने के लिए आप विज़िट कीजिए गूगल EA इंग्लिश फोनिक्स बुक 1। यूट्यूब पे भी यही सर्च कीजिए EA इंग्लिश फोनिक्स बुक 1। ओके, और इस किताब की PDF बुक भी आप लोगों को दस्तयाब है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमसे लिंक मंगवा सकते हैं कमेंट्स में, ताकि हम आपको उसका लिंक दें, उसको क्लिक करें और इसकी बुक डाउनलोड कीजिए। ताहम इस वीडियो को आप यूट्यूब पे ही हासिल कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी प्ले कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद EA।